Okay, I think 7 students have joined, so probably we can start with the class. Else, we'll be left with, not many time to complete this session. Is my voice audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I need replies from everyone, and so the motto of the class is that everyone should be very, very attentive, just in case you're not being able to understand or you're not finding it relevant to the context of learning. So you can raise your hands and probably you can pose your questions. Okay, and most importantly, uh, mm, if you are finding it difficult, okay, then and there you can stop me and ask me. And is everyone comfortable with Hindi or English? Yes, ma'am. Is everyone comfortable with English? Ma'am, both with Hindi and English. Both Hindi and English? Okay, Yes, ma'am. okay, okay, fine. So at Preferably, times, sorry, yes, Vineet, preferably Hindi. your voice is not audible properly. Ma'am, he Vineet, prefer Hindi. okay, he prefers Hindi. Okay. Mm-hmm. Okay. So I'll take a note of that I have to speak in Hindi as well. I'll do that. Okay. Now, can all of you introduce yourself one by one? Like, आप कहाँ से हो, क्या हो? We can start with you, uh, with Nikita. Yes, ma'am. My name is Nikita. I'm from Haryana district, Jeend. District? Jeend, ma'am. Okay. Okay, you're from Haryana. Yes, Okay. ma'am. Hmm. Next, I'm Vinit, ma'am, hmm? Chandigarh. From Ma'am, Chandigarh. I'm from Chandigarh. Hi. Okay, okay, okay. Rest, please introduce yourself. Good morning, Hello, ma'am. good morning, ma'am. Why? Yeah. Yes, Ruby. I am I'm Janet. Ruby. I'm from Delhi. Yeah, Ruby, you're from Delhi. Delhi, which place? Ma'am, Adesh Nagar. Okay. Okay. Yes, Zainab. Good morning, ma'am. Yeah, morning. Morning, I am Zainab. Janet from Delhi. Yeah, also from Delhi. Yes, ma'am. Okay. Okay. Uh, My name is is, Bhavna from Bharatpur. yeah, Bhavna Sachdeva from which place? Bharatpur. Bharatpur. Um, yes. Okay. Bharatpur, which, state? Village Jurera. No, no, no. Which state? State Rajasthan. Rajasthan. Okay. Yes. Okay. 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 Perfect then. I got a little brief about you guys. So we can start with the class. So tell me one thing. Why do you think fashion is important? First thing, why do you think fashion is important? It could be anything. Just feel free, very comfortable. Okay. And I'll explain all of your doubts, right? Just it could be any answer, right? Don't think that you have to give answers which is pertinent to fashion industry only. Just tell me in general. Okay. Why do you think fashion is important, or what pushed you to pursue passion, fashion? Ma'am, for me, fashion is my self expression. मेरे culture को reflect करता है. It boosts my confidence. It boosts your confidence. Very good. Yes, ma'am. Very nice. Very nice. Yes. Self experience. Self experience. भावना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, सेल्फ एक्सपीरियंस एज इन मतलब कैसे? Um,
Fashion is way to express who are and how you want to be. Yeah, mm, it's a medium of per- self expression. Hmm. Yes, anyone else? Anyone else? And fashion shows my personality also. It shows, reflects your personality as well. Yes, agreed. Yes, Vineet. Ma'am, connect with social trends and communicate. क्या क्या? Ma'am, connect with social trends and communication. It stands with social trends and communication. Okay, Yes. okay. And what else? मैम फैशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए क्योंकि हम लोग ना किसी के ड्रेसिंग सेंस से ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन इंसान कैसा है। एक कॉन्फिडेंस लेवल भी हमें शो होता है अगर हम हमारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो तो। True, true. Agreed. Hmm. Yes, Bhavna. Yes, ma'am. बोलो. Contribute towards the discussion. Meenakshi. Yes, yes, Bhavna. You were saying something. Tell me. See, one thing I'm telling you, you have to participate in the class. You cannot really say कि तुम आप चुपचाप बैठोगे और मैं पढ़ा के चली जाऊंगी. That is not going to happen. ठीक है? If I'm putting an effort to make you guys read, so then you also have to contribute by some way or the other. And some way means that you have to be a part of it. Okay? You have to be a part of it and you have to contribute. Understood? Yes, ma'am. Okay. Now, coming to fashion industry. Now, what's the screen is visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Okay. Now, let's start with the presentation then. I have made a very brief presentation on the fashion industry. So this is a subject, okay, wherein it talks about the industry as a whole, fashion as a subject, right? So fashion, since time immemorial, right, it has always been in practice, right? Fashion is not something जो कि आज है और कल नहीं था. ये सदियों से चला आ रहा है. ठीक है? In varieties, in different forms, okay, different styles, in different drapery, right? So fashion has always been prevalent, right? The Yes, fashion ma'am. yeah, the fashion industry as a whole, if you want to take down notes also you can, right? That is for your reference, you can take down notes. Okay. Now, fashion industry encompasses the design, manufacturing, and marketing, retailing on clothing of accessories and footwear. Now, fashion industry, fashion का मतलब यही है कि something which boosts your self confidence, something जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे लाइफ में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या क्या है वो? रोटी, कपड़ा, मकान, है ना? These are the three fundamental elements, right? Yes, ma'am. Roti is your agriculture. Second is your clothing, okay, and shelter, right? A house or a place to reside, right? तो कपड़े का क्या मतलब? Is it just about a piece of cloth or how has it moved forward? That is the formal understanding of कि हमें कपड़ा अपने बॉडी को कवर करने के लिए चाहिए ही चाहिए, right?
In whatever means, in whatever forms, in whatever styles, that is a different case altogether. Textiles has always been there for centuries, for ages together now, right? तो फैशन टर्म जो है, ठीक है, ये धीरे धीरे कांस्टेंट चेंजेस को रेफर करता है. अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी डीपली. फैशन जो है ये छोटे छोटे चेंजेस को डिपिक्ट करता है. बिकॉज आप तभी एक चीज को बोलते हो कि इट इज देयर इन फैशन व्हेन इट चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यू डोंट से कि ये तो अभी, यू डोंट से कि अच्छा ये तो एक ऐसा ऐसा स्टाइल है जो कि सदियों से चलता आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से पोल्का डॉट्स. आपको पता है पोल्का डॉट्स क्या है? Yes, ma'am. सो इफ आई टॉक अबाउट पोल्का डॉट्स, तो पोल्का डॉट्स में वो डॉट्स तो जब मूवी बनी थी तब तो आया था, करेक्ट? व्हाट वाज दैट मूवी? कैन यू टेल मी व्हाट वाज दैट मूवी? Don't know the name of the movie, ma'am. कैन यू नेम द सॉन्ग? बॉबी, राइट? मैम बॉबी मूवी. सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो मैम मेरे को नहीं पता, लेकिन सेकंड टाइम ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण ने पहना था. क्या क्या? मैम सेकंड, मुझे फर्स्ट टाइम तो पता नहीं कौन सी मूवी में था, लेकिन मैंने जो लास्ट टाइम मतलब देखा तो ओम शांति ओम में पहना था पोल्का डॉट. और हाँ, मैम एक और प्रियंका वो चोपड़ा ने भी बाद पहना में था. आया, वो बाद में आया. द फर्स्ट मूवी that where you found that wherein you saw or your parents saw these polka dots was in the movie Bobby, Bobby. Okay, it was a very beautiful movie wherein Dimple Kapadia was the actress, right? Right, and wherein she was the one who wore that dress. ब्लैक स्कर्ट में पोल्का डॉट का एक वो टॉप पहनी थी, करेक्ट? नाउ द थिंग इज, ये जो चीज है, ठीक है, आप आज के डेट में भी पोल्का डॉट्स देखते हो, है कि नहीं? बताओ. टुडे आल्सो यू सी पोल्का डॉट्स, हाँ, राइट? यस मैम. But how is that different? How is that polka dot different from that of the Purana movie, from the old movie that you saw? वो जो पुराने मूवी में बहुत छोटे छोटे और बहुत सिमेट्रिकल पैटर्न में वो पोल्का डॉट्स हैं, बट आज के डेट में यू सी लॉट ऑफ वेरिएशंस इन इट, right? So the fashion or the style has was there, but it has changed over a period of time with the changing preferences and consumer taste. It is changing as per the consumer taste and preferences. Is it clear to everyone? मतलब यही है कि जब हम फैशन के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि पोल्का डॉट्स तब भी था, आज भी है, आज भी लोग उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, बट किस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं? व्हाट इज द एसेंस ऑफ अप्रिशिएशन? they appreciate the design through different variations, different style languages. Okay, they appreciate the design element, okay, which is polka dot. They appreciate the design element through various means and cycles, right? तो वो क्या है, वही सेम चीज वो रिपीट हो रहा है, पोल्का डॉट ही रिपीट हो रहा है, लेकिन अलग स्टाइल में, अलग पैटर्न्स में, अलग प्रिंट्स में, ठीक है? सो दैट्स व्हेन you see lot of variations in a particular set of design. Okay, and change is the only constant thing in fashion. The industry can only thrive, the industry can only survive with the fact that when there is a change, when there is a, a manipulation of fabric, when there is a change in style, preferences, colors, right? आप लोग तो स्टूडेंट्स हो, आप लोग मुझे ये बताओ कि
आपकी मम्मी का जो पसंद है, इज इट नेसेसरी दैट कि वो 100% आहू बहू आपके टेस्ट के साथ वो मैच करता है? कैन यू टेल मी यस और नो? No, ma'am. नो मैम। राइट, मैच नहीं होता ना? मैच होता है क्या या नहीं होता, नो क्या मैम। होता है? No. Yeah, so it doesn't matches. Why? Because we have grown in a different age, right? But your parents have grown in a different age, right? So every individual has their own perception towards fashion. Every individual see or understands fashion in their own interpretation, right? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि मम्मी को जो चीज़ पसंद आ गई थी, नेसेसरी नहीं है कि आपको वो चीज़ पसंद आएगी। अब मान लो फैशन एज एन इंडस्ट्री अगर वही चीज़ को नहीं समझेगा, ठीक है, वो बोलेगा कि सिर्फ नहीं जो चलता आ रहा है सदियों से हम उसी को चलाएंगे, ठीक है, तो विल यू अप्रिशिएट दैट? टेल मी yes or no? No, ma'am. You need change, right? That is the very human instinct, that you cannot really survive with a particular fact that कि ये सेम चीज को तुम्हें डेली 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 रिपीटेटिव बेसिस में वो मिलता रहे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गिवन, ठीक है, टू ईट दाल चावल एवरी डे, ठीक है, a how wholesome, square meal, every day you are given dal chawal to eat, will you be happy to eat it? Maybe 1 day, 2 day, 3 days you will eat, ठीक है, फोर्थ डे से आपको फिर इरिटेशन होने लगेगा, फिफ्थ डे से आप फिर मना करोगे नहीं नहीं मैं डेली डेली दाल चावल नहीं खा सकती या खा सकता, ओके, बिकॉज आर टेस्ट changes, because we need something different in our palette, right? अब सेम कपड़ा को आप जब खरीदते हो ड्रेसेस, आप अलग अलग स्टाइल्स के कपड़े खरीदते हो। क्यों खरीदते हो? क्योंकि आपको हर दिन कुछ नया पहनना होता है, आपको हर दिन कुछ अलग चाहिए होता है, और उस अलग को लाने के लिए फैशन इंडस्ट्री वर्क्स। गेटिंग मी? समझ में आ रहा है जो मैं बता रही Yes, हूँ? ma'am. Is it clear to everyone? I could see only 1 2 यस students मैम। responding. Yes, ma'am. आपको प्लीज बोलना होगा कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, बट आपको बोलना होगा। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप प्लीज हाथ खड़ा करके आप मुझे प्लीज बताना, ठीक है? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नाउ सो दैट इज द थिंग, जब हम फैशन के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वी अंडरस्टैंड ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, फिर ये इंडस्ट्री ग्रो कैसे कर रहा है, इस इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट इसने डाला हुआ है ग्लोबली, नेशनली, इंटरनेशनली, कैसे इसको, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फैशन इंडस्ट्री in a global scenario, right? What are the different kinds of fashion cycle, okay, what are the different kinds of design that the fashion houses incorporate, or what are the different kind of design principles that the design houses incorporate in terms of bringing something into life, right? How does the garments which is made after the production, how it is, how does it get sold? What is the supply chain around it? Does it get distributed? Okay, which are the companies which are making a lot of profits through different strategies, and how are they making money out of them? Okay, what are the future trends? What are the new fashion trends that are upcoming? Okay, what would be there in the next season, right? So understanding all of this is very very important. This is very important, this part, right? Very important. It's because that कि आप समझोगे नहीं तो आपको फिर समझ में आएगा नहीं, है ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू नो दैट कि ये क्यों है, कैसे है, and why is it important, okay?
So for that we have to study about the historical overview, fashion as an industry, what is the global impact, what are the fashion cycle, what is fashion design, what is fashion marketing, what is fashion retail and distribution, sustainability and ethics, future trends. Clear everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या अभी तक कोई डाउट है कि आपको कहीं ऐसा कुछ है जो समझ नहीं आया है, या फिर ऐसा कुछ है कि आपको लग रहा है कि यू माइट नॉट, मतलब ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस जहाँ पे आप मुझे कुछ पूछोगे. इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? गाइस प्लीज फील फ्री टू क्वेश्चन. आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर मतलब या तो ये है कि आप सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गए, या तो आपने कुछ नहीं समझा. Two things are possible. Okay, so you have to answer. Is everyone clear? Clear, ma'am. Yes. Okay, good to go. Yes, So shall ma'am. we move to the next slide then? Yes, ma'am. Okay, so now coming to the industry. Okay, okay, fashion industry is a multi-billion dollar global enterprise or industry. Okay, it is a huge profitable industry wherein the business, okay, the business is devoted to making and selling clothes. Not only clothes, fashion accessories. Okay, it could be for haute couture, it could be for mass. Okay, so the art of making and selling clothes, okay, to a consumer, okay, is fashion. Selling is a secondary part, the making of the garment is the primary part. Okay, the making of the garment is a primary part. But now, because we are understanding it from a management perspective, from a marketing perspective, from a business perspective, okay, so we need to understand how the industry operates. Okay, how the industry operates, what are the essential or crucial elements that is important, okay, in achieving this, okay, parameters in achieving this. So some observers distinguish between the fashion industry as high fashion or mass fashion. नाउ जैसे कि आप लोकल मार्केट में जाते हो, ठीक है, आप जब लोकल मार्केट में जाते हो तो आप देखते हो कि आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान लेने हैं, ठीक है, आप देखते हो कि अलग 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 ब्रांड के चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ ब्रांड्स हैं जो कि सस्ता है और इट इज़ अफोर्डेबल, कुछ ब्रांड्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है ना, उसकी स्टाइल और डिजाइन लैंग्वेज भी अलग अलग होते हैं. अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग, what is the difference that you see, what are the differences that you have noticed over a period of time, जब आप कोई चीज जो थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट में, और जो प्रोडक्ट जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंसेस आपने नोटिस किया है, जरा बताना मुझे. मैम सबसे पहले डिफरेंस जो होता है ना मैम उनकी फिनिशिंग का होता है. यस, वेरी गुड, फिनिशिंग. मैम क्वालिटी यस, फिनिशिंग. ओके, क्वालिटी. और फैब्रिक की Packaging. क्वालिटी अलग होती है हाँ, और क्वालिटी. फिनिशिंग प्रॉपर से नहीं होती है और मतलब कि स्टिचिंग भी जो थ्रेड होता है ना वो भी उसमें निकला हुआ होता है. हम्म. और जो आप ब्रांड के पास जाओगे किसी पे तो हर चीज एकदम फिनिशिंग प्रॉपर साइज प्रॉपर फिटिंग होती है. हम्म. And packaging. क्या? Packaging. विनीत, आपकी आवाज नहीं आ रही है.
हेलो. जिसमें मैं क्यों पैकेजिंग भी डिफरेंट होती है उनकी. Packaging is also, yes, yes, very good. Packaging. Packaging and ये तो आपने बस गारमेंट्स के बारे में बताया. बाकी चीजों के बारे में भी सोचो. मैंने आपको इन जनरल पूछा है कि what are the differences that you find. You have to tell me the Durability, ma'am. yes, durability. और क्या है और finishing, quality, packaging, durability. What else? बताओ, सब म्यूट हो गए. हाँ, बताओ बताओ. सिर्फ 4 ही पॉइंट्स आए. मुझे सबको एक एक पॉइंट बोलना होगा. एवरीवन, यू कैन मैम नॉट. प्राइस भी डिफरेंट होते हैं. हाँ, प्राइस डिफरेंट होता है. और यस कविता. कविता. हेलो. यस. यस मैम, क्वालिटी हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है. अगर एक्सपेंसिव है तो क्वालिटी बेटर होगी, अगर इनएक्सपेंसिव है तो क्वालिटी चीप होगी. हाँ, दैट इज अंडरस्टूड. क्वालिटी तो बोला गया है. एनीथिंग एल्स? मैम मैंने ही बोला था. Oh, you were the one who talked about quality. यस. Okay, okay, okay. ठीक है. और anything else that you want to share? मैम मे बी कंफर्ट जोन कि अगर हम अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक हम वेयर करते हैं तो हमारा कंफर्ट जोन अच्छा होगा. हाँ, मतलब it's मे comfortable. बी. यस मैम. Hmm. It's comfortable. Okay. And then apart from finishing, quality, packaging, durability, price, comfort, anything else? Ma'am, branding. They are copy of branding. Very good, very good. Branding. Branding. और कुछ? मैम ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है, उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है. मतलब it's durable, right? It's more durable. Meenakshi, यस मैम. yeah, tell me. बताओ बताओ. मीनाक्षी, यस मैम बोल के चुप रहने से नहीं होगा. यू हैव टू आंसर. ब्रांडेड प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाते हैं कहीं से भी, ब्रांडेड प्रोडक्ट कहीं से भी अवेलेबल हो जाते हैं. मतलब किसी भी कंट्री से आप ले सकते हो. इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. यस मैम. नॉट रियली. मतलब बेसिकली यू आर सेइंग द accessibility. Okay, could be to some extent but not completely. डिफरेंट वेट. Sorry. डिफरेंट वेट मतलब ब्रांड के कई बार वेट हल्के होते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है इस वजह से. अच्छा, ओके, ठीक है. और
मैम ब्रांडेड प्रोडक्ट में साइज भी अच्छे से मिल जाता है, फिट साइज के। साइजेस, गुड। साइजेस, स्टाइल, कलर, हाँ, साइज, स्टाइल, color, and मैम ब्रांड के क्लोथिंग का अपना नाम होता है, लेकिन अगर आप बाहर से सेल करते हैं वो कोई भी अपना नाम, अपना ब्रांड बना लेते हैं, अपना नाम रख देते हैं उनपे। क्या 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 नहीं समझ आया जैनब, क्या बोल रही हो? जैनब फिर से बोलना। हेलो, am I audible to everyone? यस यस मैम। मैम। हाँ, तो जैनब बोलो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना आप लोगों को कि किस किस पैरामीटर्स के वजह से द इंडस्ट्री इज थ्राइविंग. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. डिजाइन, Design, yes, very मैम good. गारंटी, Guarantee of what? मैम प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस अगर पहले खत्म हो जाता है, अगर खराब निकल गया प्रोडक्ट, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट में हमें अच्छे से वो रिप्लेस करके देते हैं, बट अनब्रांडेड की कोई गारंटी नहीं होती कि वो चेंज होगा नहीं होगा बाद में। तो मतलब वो क्वालिटी के बारे में ही, क्वालिटी के अंदर ही आ जाएगा फिर. एक गारंटी इस बात की भी है वो लंबे टाइम तक चलेगी। वही मैं बोल रही हूँ, तो वो क्वालिटी के अंदर ही आ जाएगी ना. यस मैम। Will come under reliability, or you can say, okay, I'll write it out then. Reliability. You can rely on the brand. Okay, reliability. So how many points did we had? Finishing, quality, packaging, durability, price, comfort, branding, accessibility. Then you have versatility, design, reliability. है ना? Is that clear to everyone? यस मैम। Okay. So ये जो almost around 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, now हमने कुछ कुछ करीब 11 पैरामीटर्स डिफाइन किए. ठीक है, हमने कुछ 11 पैरामीटर्स डिफाइन किए to understand how an expensive product is different from that of a local product. Okay, now we need to understand or we need to know that कि एक प्रोडक्ट एक दूसरे से कैसे अलग होता है, और वो प्रोडक्ट अलग होने का रीजन क्या है, अलग है भी तो किस तरीके से अलग है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने कहा कि एक प्रोडक्ट को देख के भी उसका एक विजुअल अपील होता है यस ना, मैम। विच विल कम अंडर योर डिजाइन. सो डिजाइन में एक विजुअल अपील होता है. आपको हर चीज तो पसंद नहीं आ जाती, आप जाते हो, है ना, आपको कुछ चीजें पसंद आती हैं, कुछ चीजें पसंद नहीं आती हैं. दैट विल कम अंडर योर डिजाइन. But apart from the design, what are the other parameters that holds a lot of value in determining whether that product is for the mass or for a haute couture, right? So what are the parameters? So the parameters, those which you made me note down, are the parameters which are responsible for this occurrence. ठीक है, व्हाट आर दोस पैरामीटर्स? फिनिशिंग. अब जब एक अच्छा प्रीमियम प्रोडक्ट देखोगे, you will fall in love with the types of finishing that they have made possibly. Okay, fitting is very very important. Fits, अगर कोई गारमेंट अच्छे से आपको फिट नहीं हो रहा है, तो डू यू रियली थिंक यू विल अप्रिशिएट दैट ब्रांड? नो. नो मैम। हाँ, नो मैम। नहीं करोगे. ठीक है, कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी बड़ी भद्दी है और आप उसको देख रहे हो कि वो ब्रांडेड है,
तो क्या आप उसको लेके आओगे? नो, यू विल आस्क फॉर अ न्यू पीस, maybe for the same brand, but for a new piece. You would not like to entertain your wardrobe with a, older piece. Getting me or not? यस समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. यस So that is the thing. Now please note down the points that I have told you, कि ये इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है फैशन इंडस्ट्री में. One is your fabric finishing. Okay. Second is quality. First is fabric finishing, second is quality, third is packaging, third is packaging, fourth is durability. Is everyone writing? Yes, यस ma'am. मैम। We Yes, are. ma'am. यस Yeah. मैम। Finishing, quality, packaging, durability, price. Okay. Then you have price. Then you have comfort. Then you have branding. Then you have accessibility. Then your sizes. Then you have design. Then you have reliability. Okay. So these are the most crucial factors which decides on the fact that ki whether. Nikita raised her hand. Yes, Ma'am, I have one more point in my mind. हाँ. Ma'am, branding clothes sets trends and often wide variety of style. Each season they give us different trends and different variety of clothes. Hmm. So So trends is also sets trends, ma'am. Branded clothes sets trends. trends are first set and then you see the garments. A garment never set a trends. A garment never sets a trend. You have various theories around it, right? So the Okay, ma'am. various theories are trickle up theory, trickle down theory, trickle across theory, and that's how a trend follows and gets forwarded, right? So you are, if you are saying that the trend is a parameter which sets the product, okay, which sets the product tonality, that whether that would be an expensive product or non-expensive product. So it is not necessary. Trend is a part and parcel of fashion, okay, overall aesthetic. But these are the parameters which will stay abide whether that product is a, expensive product or whether that product is a non-expensive product, right? Yes, ma'am. So now coming to okay, so these are the parameters. Now fashion industry is a multi-billion global enterprise industry devoted to the business of making and selling clothes.
Some observers distinguish between the fashion industry as high fashion and mass fashion. Okay, so some industry डिफरेंशिएट्स. जैसे कि आप देखोगे, आप कोई भी ब्रांड लो, ठीक है, कुछ ब्रांड्स होते हैं जो कि बहुत नीश मार्केट के लिए होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नीश? नीश मींस फॉर अ सेट ऑफ क्लाइंट्स, वेरी डिफाइंड सेट ऑफ क्लाइंट्स, फॉर अ वेरी डिफाइंड मार्केट, कि वही लोग ही यह कपड़ा अफोर्ड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, ओके, so these collections that they make, okay, is not for the mass. It is high fashion. It is for the elite, from a premium segment or for a niche segment, a particular segment, right? But mass is something which is for everyone. For example, name some brands which caters to the mass market. Name some brands. Ma'am, H&M, Zara, H&M, Zara, Tommy yes. Hilfiger. Yes, and Studio, ma'am. लिबास, कायरा, Libias and Gaira, and Nike, Adidas, hmm, Reebok, hmm, Essex, Under Armour, Under Armour, and many more brands. exactly. So there are a lot of mass market brands because we have a huge population, right? So उन सबको cater करने के लिए we need to have companies which would cater to the mass market. Mass मतलब क्या है? More in numbers, okay? पहले क्या था? If we talk about the history, पहले लोग घर में कपड़ा बना के पहनते थे. आज के डेट में हम वो नहीं करते. आज के डेट में we go to the shop, we like it and we buy it. है कि नहीं? You all will agree to this, Yes, ma'am, agree. right? तो वैसे ही तो हम जब कोई गारमेंट को पसंद करते हैं, उसका लुक देखते हैं, फिट देखते हैं, फिनिशिंग देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, फिर उसका ड्यूरेबल है कि नहीं है देखते हैं, ठीक है, अच्छे ब्रांड का है कि नहीं देखते हैं, ठीक है, इसका साइज, फिट, कलर, स्टाइल कैसा है वो देखते हैं, है ना? ये सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद देन वी डिसाइड कि हम इसको उतना पैसा देंगे या नहीं देंगे, है ना? यस मैम। ये सारे पैरामीटर्स को जब एक कोई कपड़ा फिट होता है तब हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, 3,000 5,000 हम दे सकते हैं, है ना? बट व्हेन इट कम्स टू ब्रांड्स लाइक सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा, ठीक है, तो आर्टिजनल पीसेस, तब क्या होता है? कैन यू टेल मी तब क्या होता है? हाउ डज दिस इंडस्ट्री देन ऑपरेट्स? Customize design according to customers, ये लोग हाँ, design बनाते. obviously it is designed as per the customers, but how then they decide on the price? How do then they decide on the price? कैसे डिसाइड करते हैं? मैम, कस्टमर कैसा फैब्रिक चाहता है, कितना डिजाइन, कितना एम्ब्रॉयडरी, उनको उसके ऊपर कितना वर्क लेबर लगेगा, उसके अकॉर्डिंग में भी I agree with you, Nikita, 100%. But when a brand like Sabyasachi, वो तो जाके एक एक कस्टमर को पूछेगा नहीं कि आपको क्या चाहिए. That is for a brand or maybe that is for a designer boutique और a boutique जहाँ पे कि वो लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बनाएगा. जब कोई डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी हो गया या फिर रोहित बाल हो गया, ठीक है, ऋतु कुमार हो गई, will they go and ask individual customers? No, they will launch a collection, okay, they will launch a collection who will be the trend setters for the next year. क्योंकि जब आप सब्यसाची का कलेक्शन देखते हो, जब आप
मनीष मल्होत्रा का कलेक्शन देखते हो, what is the idea that you get in your mind? You feel like, if possibly they could be a part of your room, okay, of your wardrobe, right? But it gives you a design direction. At the end of the day, it gives you a design direction. तो कहने का मतलब यही है कि ये जो डिजाइनर्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंडिपेंडेंट इन नेचर. They are very very independent in nature, and what they do is they grab the opportunity of putting something very new into the market, which is appreciated by the customers. Okay, because they make something every time. They make something new, they come up with a new concept, with a new idea. Okay, so people appreciate the work of the designer, right? Which is why it is widely accepted. तो फिर क्या होता है कि वो कस्टमर जो है, वो जाके वो प्रीमियमनेस के वजह से उस वो पैसा देता है. एक एक लहंगा उसका 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक जाता है, या फिर ज्यादा भी जाता है. बट एक चीज आप ये सोचो, वो ब्रांड जो है उसका भी तो वैल्यू है. सब्यसाची जब एक लहंगा बनाता है, डेफिनेटली वो प्रीमियम स्टिचिंग, प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम पैकेजिंग, हाईली ड्यूरेबल, ठीक है, एकदम हाईली कंफर्टेबल, ओके, वेरी रिलायबल, इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, वो सब विजुअल अपील, ये सब में वो 100 आउट ऑफ 100 है. बट वो जो ब्रांड है, ठीक है, वो जो ब्रांड है, वो ऑपरेट कैसे करेगा? वो ऑपरेट अपने ब्रांड वैल्यू के हिसाब से करता है. ओके, वो एक पॉइंट से जब स्टार्ट किया होगा, तब आपको नहीं पता होगा कि सब्यसाची कौन है, क्या है, कोई आइडिया नहीं होगा. बट जब वो धीरे 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 अपने लिए मार्केट कैप्चर करना स्टार्ट करेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ओके, he is a designer who worked for Deepika Padukone, who worked for Priyanka Chopra, who worked for different other celebrities. He is a celebrated designer. He's a celebrity designer, right? So from there you get a understanding ki acha, that's how they have made the brand. And that's the thing which makes it exclusive, कि वो सिर्फ उन्हीं का है. So we call them in fashion as haute couture, right? We call them as haute couture, HAUTE COUTURE. It is called haute couture. Understood, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट है? No, ma'am. Okay. Now, fashion is best defined simply as the styles or the styles of clothing and accessories worn at any given time by a group of people. However, the fashion industry encompasses the design, manufacturing, distribution, marketing, retailing, advertising, and promotion of all types of apparel, from the most rare-filled and expensive haute couture. Sometimes the broader term fashion industries is used to refer a myriad of industries and services that employ millions of people internationally and nationally and locally. Now, आप इस सेंटेंस से क्या समझे? Tell me, what did you understand from this paragraph? The screen is visible to you? Okay. Can you tell me what did you understand from this? Guys? Nikita, Bhavna? Am I audible to everyone? Yes, ma'am. You are audible. Yeah. So please tell me, what do you understand from this paragraph? ये पैराग्राफ में ये लिखा है कि जब हम फैशन इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं या सोचते हैं, so it is a multifaceted, organization which
operates in different verticals. Which operates in different verticals. What are the different verticals? क्या क्या direction में काम करता है? It encompasses design. Okay. Second is manufacturing. Design बन गया, अब उसको manufacture करना है. Bringing your design into life, basically. And then once it is manufactured, ये फिर बाहर जाके कैसे रिटेल हाउस में सेल होएगा, ये आप लोगों के पास कैसे पहुंचेगा. बेसिकली एक फॉर्मल, एक सीधा सा लाइन ये समझो कि आपको एक डिजाइन पहुंचाने के लिए एक कपड़ा आपके पसंद के हिसाब से समझ के बना के पहुंचाने तक, आपके डोर स्टेप में पहुंचाने तक फैशन इंडस्ट्री उस तरीके से काम करता है. सिंपल. इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रिटेलर माइंड और द ब्रांड माइंड कि अच्छा मुझे नेक्स्ट सीजन के लिए काम करना है जो कि ऑटम विंटर आ रहा है. तो ऑटम विंटर में मेरे ब्रांड के डिजाइन लैंग्वेज के हिसाब से आई विल मेक अ कलेक्शन. उस कलेक्शन को मैं फिर लॉन्च करूंगा. ओके. वंस इट इज लॉन्च्ड, द प्रोडक्शन विल बी डन. प्रोडक्शन करने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद फिर मैं उसको लेके शॉप फ्लोर में उसको डालूंगा. ठीक है. शॉप फ्लोर में डालने के बाद फिर कस्टमर्स आएंगे और फिर वहां से रिटेलिंग होगी. उसके बाद वो प्रोडक्ट्स मेरे सेल होंगे, प्रमोशन होगा, फिर वो सेल होएगा. राइट. सो द ओवरऑल चेन ऑफ वर्क, okay, overall chain of work starting from the inception of creating something new to the garments reaching at your doorstep, that's how a fashion industry works. That's how a fashion industry works. Understood? Yes, ma'am. आपने कुछ सोचा उसको बनाने से लेके, स्केच या फिर दिमाग में है मुझे कुछ बनाना है, उसको वहां से लेके वो जब तक बन के आपके घर तक पहुंच नहीं जाता, कस्टमर के घर तक पहुंच नहीं जाता, द एंटायर ओवरऑल प्रोसेस डील्स और द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट वर्क is done in the fashion industry. Understood? Clear, everyone? Clear. Yes. So Yes, you ma'am. cannot Yes, really ma'am. say कि फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ कपड़े बनाए जाते हैं, या फिर यू कैन नॉट रियली से कि यहाँ पे सिर्फ it is only stitching or only manufacturing. No, it is a myriad of industries. Myriad मतलब multifaceted. In different verticals it is working. Yes, Okay. In different verticals it is working. Yeah. The fashion industry is a product of modern age. 19th century के बाद से, ठीक है, production as in for mass, the idea of getting a same piece produced for a mass started from 19th century. Before that, okay, before that, the idea of mass production was not there. वहां तब ड्रेस मेकर्स थे कि वो बना के आप लोगों के लिए देते थे. ठीक है. पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर्स वो लोग बनाते थे, देते थे. ठीक है. सो इट इज नॉट जस्ट फॉर अ मास, इट वाज फॉर इंडिविजुअल्स, हैंड टू हैंडमेड, handcrafted. Okay. So the fashion industry has a product of modern age. Prior to the mid 19th century, virtually all clothing was handmade for individuals, either as home production or on order basis from dressmakers and tailors. आपको याद होगा कि पहले हर चीज को ना, ठीक है, जाके ऐसे मॉल्स में या शॉप फ्लोर से हम खरीदते नहीं थे. हम कपड़ा लाते थे, उसको अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से चीजों को बनवाते थे, या फिर घर की मम्मियां बनाती थी.
ठीक है। Yes, ड्रेस ma'am. मेकर्स, टेलर्स को हम देते थे कि हमें ऐसा डिजाइन चाहिए, ऐसे बना दो, ऐसा चाहिए वैसा बना दो, करेक्ट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू वुड रिमेम्बर, right? यस When it comes to your दादी also, नानी also, then you would have seen that कि वो खुद से अपना स्टिचिंग करते हैं, खुद से वो क्विल्टिंग करते हैं, करेक्ट? सो दे एंगेज देमसेल्फ, वो स्वेटर्स बनाते थे, ठीक है, वो स्वेटर्स बनाते थे। So there are a lot of things which happened previously before the mid 19th century. Okay, people used to, make garments which were handcrafted. Okay, हाथ से बनाते थे। उसके बाद, by the beginning of 20th century, with the rise of new technologies, when there was, proper intervention, technological interventions were there, कि उसको अब हमें, बनाना है, फैब्रिक बन गया, फैब्रिक बनने के बाद फिर उसको प्रोडक्शन में डालना है, सबके लिए बनाना है, थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑपरेट करना है, ग्लोबलाइज होने लगा वर्ल्ड, ठीक है। सो जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ओके, जब ये नए टेक्नोलॉजीज सच एज स्विंग मशीन्स, ओके, were brought, the rise of global capitalism and development of factory system of production and the proliferation of retail outlets such as department stores has increasingly come to be mass produced in standard sizes and sold at fixed prices. ओके, पहले क्या था कि जब आप कपड़ा बनाते थे तो आपके डिजाइन के हिसाब से, आप जैसा डिजाइन चाहते थे उस हिसाब से वो कॉस्ट आपको बना के देते थे, है ना? बट आज के डेट में भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, यू कुड सी, और लोगों को ग्लोबली ऑपरेट करना था, ठीक है, with the modern way of exploring things and giving rise to the global capitalism, what happened was ये factory system, production system, ये सब, this was brought into the mainstream of business, जिसकी वजह से जब फैक्ट्री में मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो वो फैक्ट्री का चीजें कहाँ जाएंगी? फिर रिटेल आउटलेट्स में जाएंगी, तभी तो वो सेल होगा। इंसान फैक्ट्री तो जाके लेगा नहीं कपड़ा, वो फिर रिटेल आउटलेट्स जाता था, रिटेल आउटलेट्स में वो हैंग होता था वो कपड़ा, उसके बाद कस्टमर जाता था वो रिटेल आउटलेट, जो कि आज के डेट में भी जाता है, and from there, okay, from there you get your pieces in different standardized pieces. जैसे you would see कि आप आज के डेट में टी शर्ट या फिर शर्ट या जो भी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल और एक्सेस, एक्स्ट्रा स्मॉल, these 5 7 sizes are there. These are the standard size, UK size, US size, ये कुछ कुछ स्टैंडर्ड साइजेस हैं जो चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, और वो हर किसी को फिट इन होता है ना? किसी को थोड़ा सा लूज, किसी को थोड़ा सा टाइट, और वो Yes, ma'am. इसीलिए थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव होता है, बिकॉज दैट इज नॉट मेड टू मेजर, दैट इज नॉट फॉर अ कस्टमर, दैट इज नॉट कस्टमाइज्ड, दैट इज फॉर द मास। तो वो इसीलिए वो स्टैंडर्डाइज शेप एंड साइज में आता है और उसका फिक्स प्राइस रहता है। तुम स्मॉल मान लो 1000 रुपीज में खरीद रहे हो तो डबल एक्सेल भी 1000 रुपीज में ही खरीदोगे, करेक्ट? दैट इज द थिंग। अभी तक समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, कैन यू ऑल टेल मी हाउ दिस, मतलब बेसिकली हाउ द फैशन इंडस्ट्री वर्क्स, उसके क्या क्या नुआंसेस हैं, बताओ थोड़ा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों ने समझा है सही से या नहीं। बताओ बताओ। We can start from, one person, and then maybe all can contribute towards the discussion. Ma'am, fashion industry means not only manufacturing, it includes designing, manufacturing and प्रोडक्ट जब तक कस्टमर तक नहीं पहुंच जाता, दैट Correct. इज जो इन बिटवीन जो सारी एक्टिविटीज आती हैं, दैट इज फैशन इंडस्ट्री Yeah, that is how a fashion industry works. वर्क्स। It is not just limited to a particular set of work कि ये हो गया बस इंडस्ट्री ऐसे काम करता है, खत्म। नो, स्टार्टिंग से लेके
एंड तक, जब आप मतलब जैसे स्कूल में स्टैंडर्ड 1 से लेके 10th 12th तक पढ़ते हो, उसके बाद आपका स्कूल खत्म होता है, करेक्ट? तो वैसे ही ये इंडस्ट्री भी वैसे ही ऑपरेट करता है, आपको ABCD सिखाने से लेके पूरा डिग्री +2 तक पूरा सब कुछ जितना जितना आपको पढ़ना है सब कुछ पढ़ाने के बाद ही आपका स्कूल जैसे खत्म होता है, वैसे ही दिस इंडस्ट्री ऑपरेट्स स्टार्टिंग विथ डिजाइन, कि वो दिमाग में इंसेप्शन आया कि इनोवेट करना है, कुछ नया बनाना है फॉर न्यू सीजन, एंड उसको लेके फिर प्रोडक्शन में डाल के आपके घर तक जब तक हम नहीं पहुंचता वो ब्रांड, सो द ओवरऑल वर्क activities involved in the process of this supply chain is a part of the fashion industry. That's how they operate. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anyone else who wants to contribute to the discussion? मैम पहले ना हमें ये करना है, हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, किसके लिए करेंगे, पहले हमें ये सेट करना पड़ता है। उसके बाद Correct. फिर डिजाइनिंग होती है, what Correct. to produce, how to produce and whom to produce. Then Yes. फिर डिजाइनिंग, फिर Hmm. मैम मैन्युफैक्चरिंग, then retailing, manufacturing, then retailing, marketing. करेक्ट, एब्सोल्युटली, वेरी गुड पॉइंट। हम पहले देखते हैं कि हमारा कस्टमर कौन है, उसके हिसाब से हम फिर चीजों को बनाते हैं, मास प्रोड्यूस करते हैं। मान लो हमारा यंग कस्टमर है तो उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम चीजें बनाएंगे। मान लो हमारे ओल्डर क्लाइंट्स हैं तो उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम कपड़ा बनाते हैं, विच इज मास प्रोड्यूस्ड, है ना? तो वो एज ग्रुप के हिसाब से हम अपना कस्टमर बेस डिफाइन करते हैं, ब्रांड किस तरीके का है उस हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कुछ चीजों को, एंड देन फिर रेस्ट ऑफ द प्रोसेस स्टार्ट्स, है ना? So what are the key sectors in fashion industry? What are the key sectors? कि ये प्राइमरी सेक्टर्स हैं फैशन इंडस्ट्रीज के, क्या क्या है? वन इज टेक्सटाइल डिजाइन एंड प्रोडक्शन। अब गारमेंट तो बनेगा टेक्सटाइल से ही, है ना? जब तक यार्न्स नहीं है, टेक्सटाइल्स नहीं है, तो आप बनाओगे किसमें गारमेंट? यू नीड टेक्सटाइल, यू नीड फैब्रिक्स टू मेक अ डिजाइन। फैब्रिक नहीं बनेगा तो फिर आपका गारमेंट कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, ऑब्वियसली। सो द फर्स्ट एंड फंडामेंटल यूनिट is textile, is fabric, right? You see n number of fabrics nowadays which is available in the market, है कि नहीं? आप Yes, देखिए ma'am. कितने तरह तरह के फैब्रिक्स आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। कॉटन है, पॉलिएस्टर है, प्रिंटेड है, जकार्ड है, डॉबी है, n number of things are there, right? So textile is a very very important aspect in fashion industry, wherein टेक्सटाइल में आपका टेक्सटाइल नहीं बनेगा तो फिर फैशन का आप क्या करोगे? ठीक है, सो टेक्सटाइल इज अ पार्ट, इज अ सब्जेक्ट वेर इन स्टूडेंट्स आर टॉट कि टेक्सटाइल बनाना कैसे है, टेक्सटाइल बनता कैसे है, उसका उसका आइडिया क्या है। टेक्सटाइल डिजाइन एज अ सब्जेक्ट इज इट इज ऑल्सो देयर कि टेक्सटाइल को एज अ सब्जेक्ट भी लोग लेके उसको पढ़ते हैं एंड फिर उस पर डिग्री हासिल करते हैं। सो टेक्सटाइल इज समथिंग विच इज वेरी वेरी फंडामेंटल टू द फैशन इंडस्ट्री। उसके बाद टेक्सटाइल बनने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी सी? दैट इज डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसके बाद टेक्सटाइल बनने के बाद we think about the designs that could probably we could incorporate. For example, आप कॉटन एक किड्स वेयर का कलेक्शन बनाओगे तो आप सोचोगे ना कि अच्छा किड्स के लिए है, किड्स के वो भी एज ग्रुप मान लो 3 to 5 years के हैं, ठीक है? सो यू वुड नीड समथिंग विच इज वेरी क्यूट, राइट? आप उनको बहुत क्यूट क्यूट ड्रेसेस पहनाओगे तो उसके लिए आप कौन कौन सा मटेरियल लोगे? तो वो तो टेक्सटाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का फैब्रिक लोगे। यू कैन यूज शैम्ब्रे, यू कैन यूज कॉटन प्रिंटेड, यू कैन यूज वॉयल, यू कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, राइट? और डिजाइन कैसे चूज करोगे? देखोगे सीजन क्या है, समर है कि विंटर है कि क्या है, अकॉर्डिंगली आप फिर डिजाइन्स भी देखोगे। सीजन अगर विंटर है तो थोड़ा मोटा वाला कपड़ा यूज करोगे,
ठीक है। अगर सीजन समर है तो यू वुड वांट समथिंग कि जो पतला हो, उनके लिए इजी हो, है ना। सो वैसे ही चीजें चेंज होती हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कीप थिंग्स इन योर माइंड। उसके बाद यू मेक योर डिजाइन एंड देन यू गो, इट गोज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चर होने के बाद अब ये जो कंपनी जो मान लो मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, वो उसके स्टोर्स होंगे, रिटेल स्टोर्स होंगे। रिटेल से फॉर एग्जांपल जैसे टाटा का वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड का खुद का टेक्सटाइल वो बनाता है, ठीक है। उसके बाद फिर डिज़ाइन टीम भी है जो डिज़ाइन करता है, फिर उसके बाद वो मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चर होने के बाद फिर वो जाके अलग 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 वेस्ट साइड के स्टोर्स में जाता है वो कपड़ा, है ना। उसके बाद फिर वो उसको शॉप फ्लोर में लगाते हैं, उसका प्रॉपर विजुअल मर्चेंडाइजिंग किया जाता है। उसके बाद फिर लोग जाते हैं, उसके बाद आप लोग वहां से खरीदते हो, पैसा देते हो, ठीक है। एंड उसके बाद यू आर हैप्पी विथ योर प्रोडक्ट एंड यू पे अ प्राइस फॉर इट, ठीक है। सो योर नीड्स आर मेट, योर टेस्ट प्रेफरेंसेस के हिसाब से योर नीड्स आर मेट, है ना। समझ में आया अभी तक? Yes, ma'am. सो टेक्सटाइल डिजाइन, तो ये दीज आर द की सेक्टर्स इन फैशन इंडस्ट्री। ओके, अभी तक कोई डाउट है? नो मैम। कोई डाउट नहीं है? ओके, now coming to historical overview, just give me 5 minutes, huh? Guys, if you want to take a break, you can take a bio break, or for 10 minutes we can resume the classes from 12:25. Okay, you just take a break for 10 minutes, and then we can, you just be there online. Just we can start with the classes again from 10, 12:25. Yes, ma'am. Okay.
So, shall we resume with the classes? Yeah. I guess everyone is there online. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Yes. So, yeah, yeah. Okay. So, coming to the historical perspective, coming to the historical perspective, uh, we will study about how fashion has been shaped and has how it has influenced, and what are the key moments that is to be taken care of or to be noted. So I'll be talking in brief, okay, so that you understand what are the intricacies around it. Now, the evolution of fashion spans centuries and has been influenced by a myriad of factors. Here's a brief overview of the key moments and influences. Okay, so I have just jotted it down, and then it is easy for you to understand and to learn also, right? So, first is ancient civilizations, right? So fashion can be traced back to the ancient civilizations like Egypt, Greece, and Rome, where the clothing was often used to signify social status and identity. Now, Egypt, Greece, or Rome may, okay, you will see that fashion started. You if you see those Cleopatra's paintings and all, so you would see they were highly fashionable, right? When it comes to India also, we see our kings and queens with royal robes and saris draped around their body. Okay, so the first form of symbolic adornments in terms of fashion was draped garments. Okay, so there was no concept of stitching the garment. Okay, if we go back to our mythology also, if we study mythology, so you would see our gods and goddesses are always draped, in a sari, dhoti, kurta, so all of this dhoti and with the dupatta, right? So when it comes to drapery, so be it any country, okay, be it any country, it has started with drapery. Drapery means that you drape a piece of fabric around the body in any ways, in different ways and means. Okay, if I talk about Greece, so they used to have loin cloth, okay, where tugged around their body. Okay, so you have different draping styles as per um, you know um, different geographic locations, right? So आप जाके आज जाके एक बार घर में देखना कि इसको कैसे चेंज, कैसे कैसे लोग करते थे इसको। ठीक है, इजिप्ट में लोग कैसे किस तरीके से ड्रेसिंग करते थे, उसके बाद कैसे ग्रीस में करते थे, कैसे रोम में करते थे। ठीक है, वो लोग काला सीरीज, it's a so Egyptians used to wear kala series. It's a tube like garment where they drape, you know around their waist. Okay, तो वो एक फॉर्म है एक गारमेंट का, जहाँ पे कि वो लोग क्या करते हैं उसको चेस्ट से लेके एंकल तक, ओके, वो उसको रोल करते थे अपने बॉडी के अराउंड। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज काला सीरीज। ओके, फिर शेंडेड भी होता है। ठीक है, और ये सब कुछ जो है इजिप्ट में पहला लीनन बनना स्टार्ट हुआ। लीनन एज अ मटेरियल वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन इजिप्ट। सो you must have heard कि इजिप्ट में मम्मीफिकेशन वगैरह होता है, तो मम्मीफिकेशन के टाइम लीनिन में उन लीनिन क्लॉथ्स आर रैप्ड अराउंड द बॉडी, अराउंड द डेड बॉडीज, राइट? सो Yes, ma'am. लीनिन का ओरिजिनेशन इजिप्ट से हुआ, और लीनिन का जो गारमेंट पहनने का जो स्टाइल है ड्रेपरी के थ्रू, सो इट वाज अराउंड, द स्टाइल वाज नोन एज काला सीरीज। ओके, KALASIRIS। ओके, सो इट वाज लाइक अ ट्यूब गारमेंट। मान लो कि एक छोटा एक सिंगल बेडशीट को अगर आप अपने बॉडी के अराउंड उसको रैप करोगे, ठीक है, फ्रॉम योर चेस्ट, ओके, टू द एंकल, सो इट इज जस्ट लाइक दैट। उसके ऊपर वो लोग अडॉर्नमेंट्स करते थे।
Okay, it matlab through different jewelry, through different elements with proper makeup, headgears, different elements के साथ उसको वो लोग they brought it into life. Understood? Is that clear to everyone? Yes. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Now, मिडिल एजेस, मिडिल एजेस में क्या था? ड्यूरिंग दिस पीरियड फैशन वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन एंड क्लास डिस्टिंक्शंस. पहले क्या था कि किंग एंड किंग क्वीन और उसके बाद उनके जो जो नेशनलाइट्स हैं वो थे, ठीक है, यू नो बट उसके बाद फिर फर्दर क्लासिफिकेशंस होने लगा इन टर्म्स ऑफ क्लास ऑफ पीपल. ओके, they divided them, divided people in terms of caste, creed, religion. So ये सब चीजों की वजह से there were lot of bifurcations. And उस हिसाब से फैशन इन्फ्लुएंस हुआ. ओके, जैसे कि मान लो you would see the royal people used to wear very heavily embellished garments, but when it comes to a farmer they would not wear such. ठीक है, they would wear very plain basic clothes, right? when it comes to मान लो कोई मिनिस्टर है, किंग के दरबार में कोई मिनिस्टर है, तो वो अच्छा कपड़ा पहनता है, ठीक है, उसकी फैमिलीज, उसकी वो रॉयल कोर्ट को बिलोंग करता है तो उसकी फैमिली अच्छे कपड़े पहनेंगे. बट वहीं पे कोई और है जो कि मतलब से मतलब ही इज अ सोल्जर, he might not have that access to wear something which is really fashionable, right? So वो लोग चीजों को मतलब बाइफर्केट करते गए इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्शंस, राइट? मान लो कोई हिंदू है, ठीक है, उस हिसाब से गारमेंट्स को फिर चेंज किया. कोई मुसलमान है, उस हिसाब से उनको गारमेंट्स में चेंजेस लाए गए, ठीक है. कोई बुद्धिस्ट है तो उनके हिसाब से कुछ गारमेंट, कोई पारसी है, कोई कहीं का भी. नाउ you are living in a country which is very rich in culture and which is rich in diversity, right? So in a country like that you would see पंजाब का पहनावा बहुत अलग है when it comes to उड़ीसा. Okay, when it comes to असम का पहनावा बहुत अलग है when it comes to साउथ इंडिया, राइट? है ना? सबका पहनावा अलग है. You would agree to this, all of you, Agreed, ma'am. right? Yes. तो वैसे ही जोग्राफिक लोकेशंस के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, क्लास डिस्टिंक्शंस के वजह से, ठीक है, मिडिल एज में फैशन को इस हिसाब से चेंज किया गया, ठीक है. और तब फैशन को कैसे कैरेक्टराइज किया गया? विथ वॉल्यूमिनस गारमेंट्स. द मोर रिच यू आर, यू वुड वेयर मोर वॉल्यूमिनस गारमेंट्स. अब देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में, ठीक है, द क्वींस यूज्ड टू वेयर बिग बिग गाउन्स, है ना, रोकोको गाउन्स, डिफरेंट बिग बॉल गाउन्स, ठीक है. लेकिन वहीं पे कोई अगर पीजेंट की बीवी है तो शी वुड वेयर अ वेरी प्लेन नॉर्मल गाउन, ठीक है. बट and the kings and the queens had layers and layers of garments, and which are adorned by very intricate embroideries, very rich elements, gold, silver thread से embroidery की हुई होती है, elaborate embroideries, very intricate and fine work, very delicate work. ऐसी चीजों से पता चलता है कि no, she belongs to a very रिच फैमिली. जैसे आज के डेट में अगर आप देखते हो कि कोई मर्सिडीज एस क्लास में घूम रहा है तो यू कंसिडर देम टू बी रिच, right? Whereas a person who is traveling with a, let's say, Maruti Suzuki 800, so you would consider कि अच्छा ठीक है, he is not that economically good, right? So वैसे ही we have defined ourselves, the amount we spend or the amount of effort that is put in, okay, basically how much you show off, right, will define you, that whether you belong to, in which class do you belong to. Understood? समझ में आ रहा है सबको? Everyone is following? Yes, ma'am. Yeah. Now coming to Renaissance. Renaissance was a period of change.
Okay, Renaissance was a period which saw changes in classical styles and emphasis on individualism. ठीक है, पहले वो लोग तो लोग क्या करते थे कि रिलीजन, क्लास, क्रीड, इस हिसाब से लोगों को उन्होंने डिवाइड कर दिया. उसके बाद रेनेसा में पीपल स्टार्टेड वॉइसिंग फॉर देमसेल्व्स. you know they started voicing for their own, they started voicing for individuals. I as an individual was representing myself, you are as an individual, you would represent yourself. So renaissance was a period of change which saw revival of the classical styles. उनको अच्छा नहीं लगा ये जो segregation, ये distinctions. So people started revolting around it, people started reviving the age old ways of living, culture, art, literature, fashion. तो हर चीज में ना ये बहुत रिवाइवल और चेंजेस लाने का बात किया, and which has been very very classic from a point of view, from a point of from the point where it started, right? So clothing became more tailored and fitted. ठीक है, so that जैसे कि for example if you see a woman wearing a very sharp fit, proper shoulders के साथ blazer होगा, तो आपका एक first impression आएगा कि okay, that woman is very confident, she could carry herself very nicely, right? For example, if I show you an image. If you see a woman in a blazer, if you see a woman in a blazer, for example, like this, is it visible? Yes, ma'am. Is it visible? Yes, ma'am. So you would term this woman, okay, that she's a very confident woman. है ना? See, the dressing, we call it as power dressing. है ना? The hairstyles that she has, the shoulder, the shoulder blades that she has, the blazer that she is wearing, the color that she is wearing, gives an impression of a very very confident woman who can easily carry herself. She's a businesswoman, so you get that impression, right? Likewise, okay, likewise, if I show you an image wherein she, let's say a woman, who is very casual in her approach, let's say, like for example this, okay, this blazer. So you would see and tell that ki, okay, I don't feel that woman is very confident, but she is very casual and she is very chic, right? She is very fashionable, or maybe you can say ki, that she is very, like okay type. We cannot really call her a boss lady kind of a thing, right? You would agree to this, Agreed, ma'am. right? Yes, ma'am. So वैसे ही from this you can, the image and the postures and the body language doesn't give you an impression of that this is something, that you would appreciate, है ना? You won't really appreciate that. So that is the thing. So when it comes to when it comes to clothing, so it became more tailored and fitted because Renaissance was a time of wherein emphasis was given on individualism, right? So with power dressing और वो सब चीजें बाद में आई, but then it gave confidence in individuals, right? Therefore, clothing became more tailored and fitted. With the rise of ornate fabrics, lace, and intricate details,
The invention of printing press also led to the dissemination of fashion trends through printed textiles or printed materials, right? रेनेसा के टाइम में प्रिंटिंग was brought into practice. तो तब फैब्रिक्स प्रिंट होने लगे. उससे पहले it was all woven fabric, no print was there. Renaissance was a period when printing press, printing was introduced into the scenario. And then जब printing start हुआ तो फिर लोग अपने individual voice को उस स्लोगन्स के हिसाब से या फिर आर्ट के हिसाब से प्रिंट करके फिर उसको पहनने लगे. ठीक है, तो वो एक फैशन ट्रेंड बन गया फिर. Okay, so this printing element also helped in dissemination of fashion trends through printed materials, through various slogans, through t-shirt, graphic printed t-shirts. तो ये सारी चीजें helped to voice out their feelings, right? Industrial revolution. The advent of industrial revolution in the 18th and 19th centuries brought significant changes to the fashion industry. Mass production techniques allowed for the production of ready-to-wear clothing, making fashion more accessible to a broader audience. Now, industrial revolution जब हुआ, okay, World War के बाद, okay, तो industrial revolution में हुआ क्या? With the introduction of technology, with the introduction of technology, with the introduction of sewing machines and everything, क्या हुआ कि mass production techniques यूज करके लोग फिर ढेर सारा रेडी टू वेयर क्लोथिंग बनाने लगे. डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेडी टू वेयर एंड कस्टमाइज क्लोथिंग? Ready to wear means which is, you just wear it and you are ready to good to go. I mean, you just take 2 minutes to get ready and you're good to go. So it is like a very easy dressing, right? और वो क्या है, उसमें कुछ ज्यादा मेहनत और उसमें ज्यादा इंट्रिकेसीज नहीं होते हैं. it is more accessible, it is cheaper, it is more accessible to a broader audience. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लोग रेडी टू वेयर कॉन्सेप्ट को बहुत सराहने लगे, राइट? क्योंकि वो मास के लिए प्रोड्यूस होने लगा. ठीक है, एंड देन दे गॉट दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि हाँ चलो, क्योंकि जब ये मास प्रोडक्शन होने लगा तो और वो जो ये जो क्लास का डिस्टिंक्शन, ये जो हर चीज में इतना बाइफर्केशन था, वो धीरे 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 मर्ज होने लगा. आज के डेट में यू सी देयर इज कास्ट सिस्टम एंड क्रीड सिस्टम, बट on a general note you won't see that कि आज की डेट में उतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है या फिर उस चीज को लेके लोग इतना बहुत बाइज्ड हैं कि ऐसा है वैसा है. I don't deny that it is not there, it is there, but then you appreciate every individual as they are. You don't discriminate a person on the basis on the religion, you don't discriminate a person basis on their values and morals, but we appreciate, right? We appreciate. So clothing was one such essence which brought back the idea of togetherness. तो वो जब सिमिलर कपड़े पहनने लगे, सिमिलर स्टाइल्स के कपड़े पहनने लगे, irrespective of their caste, creed, gender, religion and everything, so they thought they felt the power of belongingness. Okay, so industrial revolution को लोग बहुत अप्रिशिएट करने लगे, मास प्रोडक्शन चीजों को बहुत अप्रिशिएट करने लगे बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, राइट? उसके बाद कमिंग टू द 20th century, are you getting it? समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. Everyone is getting it, no? It's not that ki, some people can understand and some people, see, history is a little boring. I'm not saying that ki ye boring nahi hoga, but until and unless you don't know the history, how will you actually work? That will be difficult, right? So coming to 20th century. So 20th century witnessed a rapid changes in fashion driven by technological advancements, social movements and global events. From the flapper dresses of the 1920s to the sleek silhouettes of 1960s modern era, each decade brought its own distinct style.
आप जब देखोगे कि फैशन चेंज कैसे हुआ विद डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड ऑल, सो यू विल गेट टू सी कि लोग क्लोथिंग स्टाइल्स और फैशन स्टाइल में कैसे कैसे डिफरेंसेस आने लगे. आई शो यू I'll show you a video. Fashion evolution. Over the years. Um, I'll show you. Wait. Mm, these are flapper dresses. Okay. It was all in your mind. 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 I better tell you before you get close. I'm a special case, I'm not like the other ones. There is a reason why I'm still alone. If you want to stick around, you need to ask yourself, are you enough of a man? Can you take me as I am? Maybe special K, but I like my whiskey on the rocks. So all of you got a brief idea. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, all of you got a brief idea of how fashion has changed over a period of 10 years, Yes, ma'am. starting from Yes, ma'am. 1915 to 2015. You have got an idea that ki fashion style changes, body languages, power dressing, कैसे change हुआ है over a period of time, right? Yes. Right, so the flapper dresses that I taught ki, okay, flapper dresses of 1920s to the sleek silhouettes of modern era, and how every
decade has brought its own distinct style. Okay, that is very important to understand and see, right? So now coming to post-war era, following World War II, there was a shift towards more practical and utilitarian clothing, wherein brands like Chanel, Christian Dior, evolved, right? Because they started, so this idea of gowns and everything, vanished, because women started appreciating the fact that ki, we want lighter clothes, we do not want something which is suffocating or which is not heavy on us. because because World War II ke baad, the men's were the bread earners of the family, right? And when they died, okay, so women had to step out of their home and they had to step out, and then they had to go and work to earn bread for their family, right? And that cannot be done wearing a gown or something. They appreciated the fact. So when Chanel, as a woman, she understood the pain of this women's, other women's, and she started with the idea of she conceptualized the idea of minimal dressing, wherein she introduced the concept of easy undressing. Okay, easy undressing, understood? So it shouldn't take you hours to undress yourself, or it shouldn't take hours to dress yourself, right? So it should be that easy, right? It should be like short pants, or maybe skirts or tops, something which is very easy to carry, wherein you can comfortably walk and do your work without feeling heavy, wearing those gowns. Because gowns were very, very, with the crinolines and everything, it is very, very difficult for a woman to maintain a proper posture, sit with the whalebones, and then wearing a crinoline with layers of fabric. So it's difficult for a woman to work with those heavy clothes. So she introduced Christian Dior and Coco Chanel, introduced the the idea of feminine dressing, but in lighter note, right? So which is why after World War II, people started, women appreciated the idea of practical and utilitarian clothing. Okay, so there was a major shift, a paradigm shift in terms of clothing, right? Uske baad, okay, after this post war era, okay, counterculture movements emerged. Okay, counterculture movements, as in, you see hippies, punk, grunge, metal, these people, what they did was they rebelled against the mainstream fashion norms. Okay, and they embraced individualism and self expression. Now, when we talk about hippies, you would see them, they're high on hash, and then they wear psychedelic colors. Okay, they wear psychedelic colors, and they are more happy go lucky types. And I'll show you some images wherein you can better understand, probably. Wait a second. Hippies, countercultures. you know See, so they used to wear loose garments. Okay, so they were happy. They always use this natural flowers, and so they actually they boycotted the mainstream fashion norms, that you have to look in a certain way, or you have to look in this way. So they simply they moved it, they removed the idea, they stood against the idea. Okay, they were very much interested in music, they were very much interested in nature. They were they had their own expression of style with psychedelic colors. They were high on hash. So uh, that was the style, right? So so like, make love, not war. So these were the thing, these are the slogans that they used, right? So there should be no rules.
There should be no rules. You should have your own individual expression of life. There shouldn't be anything which should be imposed to you. It should come from within. It should be like the way you feel like living your life, right? There shouldn't be any restrictions or or a definition of life the way you want to. You should have your own ways of living your life, right? So that was hippie culture. Just a second, I'll show you some clothing. you know so this was the style, peace out. They always fought for peace and everything, right? You can see the images. Is it visible to you? No, No. ma'am, it's not visible. No, ma'am. Oh, it's not visible. Okay, okay, I'll show you some more. Just a second. So you could have told me, no, when it was not visible, guys. Is it visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, yeah. See, so they used slogans. So see this, peace out with the logo. You know, this was the style. No restrictions, nothing. A style of being you as an individual. Okay, the style of being you, just the way you are, just the way you are. You know, floral prints, botanical prints. You know, with the bandana. This is boho. This is not hippie. Hippie clothing. Psychedelic. Hmm. See, is it visible, guys? Yes, ma'am. Yeah. So they use psychedelic colors. See, own definition of life. Okay, own definition of life, own style, own way of you know living your life in the best way that possibly you can. Okay, see, can you see this? Own individual expression of styles. कोई restriction नहीं, जिसको जैसे लाइफ जीना है, they used to live their life in their own terms. There was no restrictions, no hard bound things that कि यही करना है, ऐसे जीना है. They used to have long hairs. The boys used to have long hairs, right? Braid it. Okay, use lot of junk jewelries wherein beads and all were used, right? Yes, So that ma'am. was a hippie style. Yeah, any doubts? Yes, guys, any doubt? No, ma'am. Okay. So you understood the different kinds of cultures that has influenced fashion? Hmm? Yes, ma'am. Okay. So they rebelled against the mainstream of fashion norms and embraced individualism and self-expression. The way they wanted to live their life. So they lived around it. Okay. So I'll show you some slogans, maybe then you would probably understand.
Make love, not war. Where is that? Uh, hmm. Hippie slogans. Flower child, stay positive. These were, the slogans. Stay wild, choose to be happy. Then they used to make graffitis. ठीक है? So these are the different kinds of uh, individual expression. You see, यहाँ पे कहीं था ना, हाँ, make love not war. These are different kinds of hippie sayings because they were revolting against war, and they had their own individual expression, right? So now I'll show you some images of punk. These are counterculture movements, different kinds of, being rebellious. Can you see this? Spikes, black. Is it visible? No? It is not No. visible. But you tell me, guys, that ma'am, it is not visible. You have to tell me, no? How will I know then? Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So this is punk. This is punk style. So these are various counterculture movements which emerged as a part of the culture. Okay. Ways of self expression. Right? Ways of self expression. ठीक है? Understood? Yes, ma'am. Okay. So any doubts you have up till now? Any doubts you have? No, ma'am. Okay. So I believe that you have understood अभी तक की हिस्ट्री कैसा रहा है फैशन का और कैसे आगे आगे चेंज हुआ. ओके. सो इंडस्ट्री को जानने से पहले हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ. मैं आपको ये बहुत ब्रीफली ये सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि बिकॉज फिर वी वोंट बी एबल टू फोकस ऑन द मेन थिंग. सो ये बस ब्रीफली मैंने आपको बताया है. ठीक है. सो इन द next classes we will study more industrial oriented things, right? Yes, ma'am. Okay, thank you so much, guys. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.